He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. Asato ma satgamaya tamasho ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu Ma kaschid dukha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Aham Brahmasmi. So good evening everyone. स्वागत है आप सभी का to this 127th Q&A session. So, and good morning to the people from the other part of the world. So as it is a Q&A session, so let's see if you have any questions. So I don't see any hands raised yet. That's good. That means people have gotten clarity in their lives. So Revati ji has raised her hand. Okay. So Revati ji, can you please unmute? Pranam Namaste. Can you hear me? Yes, we can. So I want to share something and then I will ask the question. Okay. Go ahead. So I think our internet connection was going a little. No, it's still okay. We can able to hear you. So I had shared it with you and Hari Bhai, but I really want to share it with everybody that what happened with me. So it's a repeat for you, but I'm still repeating it for the benefit of everybody else. So in my house, outside the window, in my room, there is a flag from Ayodhya which somebody has given me, which says Jai Shri Ram. So I had hung it over there. It's been there for a long time in my old house and new house. I live in a place where there is no chance of any monkey coming into this building. And suddenly one day, I think 2 weeks back,
there was this one nice large one which came and stood outside my window. And by the time I could capture it, by the time I could take a picture, it had run away. And it was actually sitting on my parapet and just, I don't know what it was doing there. But I saw it and it finally went off. I saw it jumping. And I really felt that Hanumanji had come to bless me. I'm such a param bhakt of Hanumanji that I think he decided to just come to my house. And this is, I didn't know the edge of Hanuman before joining this group or this family. So my devotion to Lord Hanuman, I think, has been so strong that he decided to come home. So it's nothing but divinity. I think, I don't think there's any explanation for this. Maybe it's just a coincidence. I don't know. Maybe the monkey just decided to come to my house, but I don't think so. I think it's very, very divine that this thing has happened with me. Okay. So I wanted to share with everybody. And now I want to ask a question. Please. So this is my favorite, has been my favorite story that you have told us all the time, and you have repeated it many times. This is the karma story of hitting the ball on the wall and not waiting for it to hit you back. Okay. I have myself repeated it so many times over here. And repeatedly, I keep feeling that, people probably stand there to get hit again. But when you gave me the logic that day of saying that, why are you waiting? Move ahead. It will not hit you then. Okay. But why is it then that people still, as a cliche keep saying this, that तुम्हारा कर्म है, तुम्हें तो भुगतना ही पड़ेगा. Okay. Meaning, when I listen to this logic, I feel it's so logical. But when they say that, then I don't know whether it is a matter of faith, whether it's a matter of unsound belief, or whether it is really just because it's a cliche, people use it. Got it. Okay. So let's start with something beautiful then. How many of you have seen these Ramayana and Mahabharata serials that used to come in our childhood days? Almost everyone, right? Everyone, at least the people, those who I see on the camera can raise their hands. All others are in the God mode, so we cannot see them. Okay, so you all have seen that. But have you noticed when you were a child and you were watching that one warrior from one side is shooting an arrow and that arrow has a snake in front of it and it is coming, and from the other side somebody sends another arrow that has two snakes on it, they collide and vanish. Then someone sends a fireball with an arrow, then another one sends water with the arrow, they combine and vanish. How did you felt when you were a child by watching all this? How were you feeling in that Magic. time? It's magic, right? And you enjoyed every bit of it. And literally more than you were not interested in Krishna, Arjuna or Ram, but you were more interested in fight. And that fight was so magnificent. And especially if you had a color television at your home, newly, and then all this happening, it would add another charm to it, right? So do you remember your childhood, that war, not even Ramayana, the war itself was so magnificent for you. And when there was a fight with fire and water and snakes and thunder and bolts and all that, you were so excited by seeing that. You never questioned it. But as we grew up, the logical mind hits it. And then it starts questioning, how is it possible even that arrow has a water in front of it, fire in front of it? Or can you see, with innocence, the magic is also lost. Now what you see is the war. You don't see the magic behind it. Similarly, when the people are saying like, Tera karm hai, tujhe bhugatna padega, can you see they are
watching the war, not the magic behind it. Why? Because that logical thinking for them has kicked in. And there are certain things in life that logic does not apply there. Logic is a limited edition of the mind. But what we are speaking of is beyond the mind. It's just like the created cannot understand the creator. Just like if you draw something, you paint something, might be you have blown life into it, but it will never see you the way you are. So when people are talking about तूने कर्म किया है, तेरे कर्म का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, that's so true, law of nature. But for whom? किसका कर्म किसको भुगतना पड़ेगा? Who is the doer? If it is the doer, then the doer has to pay the money. If you are not the doer, अगर आप करता ही नहीं हो, तो आपका कर्म क्या और उसका फल क्या? If that was the rule that जो तूने किया है उसका फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा, then why spirituality? Let us just sit under an apple tree and wait for our karma to hit back. Might be the apple falls and we will rediscover gravity, or the tree falls on us and we just die. But we don't do that, right? Can you see this logical mind is just keeping you busy? That's it. Nothing more than that. It's just keeping you busy. It's saying, तूने कर्म किया है, तेरा फल मिलेगा. तो then you sit down, na? But he will not sit down. नहीं, कुछ तो करना चाहिए. नहीं, why do you want to do that? Can you see? Its work is to keep you engaged in action. And every action should have a reaction, right? If every action should have a reaction, let me ask you, जो लोग ये पूछते हैं ना कि जब कर्म किया है तो कर्म का फल मिलना चाहिए तुमको, so ask them, if there is a fire, there is a small little fire, and you start putting ghee on that, and wood into that, and all that burning elements into that, what will happen? Won't it become a big fire? It would, right? ये हो गया कर्म कि मैंने आग में आग को जलाने वाले चीजें डाल दी और घी डाल दिया, तो वो आग और बृहत हो गया और बड़ा जलने लगा. But what if I put water on that? Will the fire burn? No, right? It will vanquish the fire. It would completely close down the fire, right? Why? Because karma are both the things. Both the times you are doing a karma. One, you are putting ghee and wood into that. The other, you are putting water into that. One is helping it to burn. The other is vanquishing it, extinguishing it. So what is spirituality? Is it fire or the water to your karma? If your karma is fire, what is spirituality? Obviously, it must be the one that recedes that, closes it down. Are you getting that? Or else, why these many sadhanas? Why these many mantras? Why these chantings? If it is all written, if it is all has to happen that way, then let us not do anything. Let us just sit and wait. Jab hoga tab dekha jayega. And there are people, they also live with that. But what do you think? What are you deciding? You have chosen this path because you felt that there is a way through which it can be, you can go beyond that cycle of that birth and death. And if this is not a new thing that we have discovered, right? From ages, people have been speaking about that. And if it was not there, why did people come up with so many things for it? इतने सारे चीजों को साथ लेके क्यों आए? इतने सारे लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? And more than that, why do you talk about it? See, I was talking to Pradeep yesterday, and एक छोटा सा प्रसंग याद आया. So उसमें देवों के देव महादेव का जो सीरियल आया था ना, उसमें शिव हनुमान के सामने खड़े हैं और शिव हनुमान को पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो हनुमान कहते हैं मैं हनुमान हूं. बोले मैंने तेरा नाम नहीं पूछा, तू कौन है?
तो हनुमान कहते हैं मैं अंजनी सूत पवन पुत्र। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? तो सोचता है, फिर कहता है मैं बानर हूं। बोला मैंने तेरी जाति नहीं पूछी, तू कौन है? तो हनुमान हाथ जोड़ के वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं वो अज्ञानी हूं जिसको ये भी ज्ञान नहीं है कि वो कौन है। Now just think of somebody like Hanuman saying this कि मैं वो अज्ञानी हूं जिसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। और देवों के देव महादेव में इतने में खत्म हो गया। मैं होता तो और एक सवाल पूछता था। मैं ये पूछता था कि तू मुझे ये बता कि तू कौन है जो जान चुका है कि वो अज्ञानी है। मतलब तू जानता है कि तू है, लेकिन बस मानता है कि तू अज्ञानी है। ये जानने वाला कौन है वो बता। तू मान लिया है कि तू अज्ञानी है, लेकिन ये जानने वाला कौन है? हु नोज दैट यू आर अज्ञानी, वो बता मुझे पहले। एंड देन इट इज लाइक हिटिंग द फाइनल हैमर ऑन टू द बोल्ट। क्या होगा फिर? So either you can live with the stories of the mind, the games that people play around. And by the way, if you think logically also about karma, who knows it really happens or not? Can those logical people prove it that karma happens? Then why are those people shouting the rich people is getting richer? जो बुरे काम करते हैं उनके पास बहुत पैसा है। जो you see, these are the same people. Have you ever seen a person walking on the path of spirituality questioning this? No, these are those logical people that claim something and again they are standing opposite to that again, because they are not able to find a way. And this karma and this story, at times I said they are just postponing certain things. They are just keeping it in such a way that कर्म है ना, देख लेंगे जब होगा, अभी थोड़ी ना हो रहा है. Now just think of if you did something right now or something happens right away. अगर आप अभी कुछ करते हो और immediately उसका रिजल्ट मिल जाता है, तो मतलब मैंने आपको मारा और 2-4 मुझे कहीं से अंधेरे से लग जाए, कोई कर्म ही नहीं करता. लेकिन कोई कर्म का बात लोग वो करते हैं जिनको लगता है कि कर्म कुछ है ही नहीं, जब आएगा देखेंगे, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है. But can you see, it is just a way of the mind. जिसने सत्यता को जाना, the one who has understood the truth, he will be far beyond it. Let me give you a very, very amazing example that you will never forget. आप में से कोई भी इसे भूल नहीं सकता, मैं जो चीज अभी बताने जा रहा हूं. देखो, एक अंधा आदमी है, ठीक है? एक अंधा आदमी है और वो हाथ में लाठी लेके जीवन भर चला. He walked throughout his life with a stick in his hand. लेकिन उसे कोई अच्छा वैद्य, कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया और उसके आंखों की सर्जरी हो गई. और जैसे ही आंखों का ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गया, उसे दिखने लगा. बचपन से अंधा था, लाठी लेके चलता था, लेकिन अब उसकी आंखों की सर्जरी हो गई और उसे दिखने लगा. What is the first thing he is going to throw away? कौन बताएगा? रेवती जी प्लीज अनम्यूट. देखो, अंधा आदमी था, बचपन से अंधा था, सो ही ऑलवेज यूज्ड टू कैरी अ स्टिक विथ हिज हैंड. और अचानक कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, तो सबसे पहला चीज क्या फेंकेगा? किसको? What will he throw away? Because he has been walking throughout his with the stick, right? So what is the first thing that he will throw away? Stick. Stick. Can you see? This is why I say कि जीवन भर आप कर्म को लेके चले, लेकिन जिस दिन आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, उस दिन पहला चीज जो आप फेंकोगे वो आपके कर्म है. What is the work of a blind man or a man with eyes with a stick? उसका क्या काम है अभी लकड़ी के साथ? आंखें खुल गई, लकड़ी छूट गया. आंखें खुल गई, कर्म छूट गया. That is the first thing that you will throw away. क्योंकि कर्ता भाव छूट गया.
जो अंधकार में आप घूम रहे थे, जिसके लिए आपको लाठी की जरूरत थी। क्योंकि मुझे संसार का सत्यता के बारे में नहीं पता था, तो मैं संसार के अंधकार में भटक रहा था और अपने कर्मों में चले जा रहा था, बांधे हुए चले जा रहा था अपने आप को। लेकिन जिस दिन मेरे आंखें खुले, उस दिन सबसे पहला चीज जो मैंने फेंका वो है मेरा कर्ता भाव। और जिस दिन मैंने अपने कर्ता भाव को फेंक दिया, उसी क्षण मेरा कर्म मेरे हाथ से छूट गया, जैसे अंधे के हाथ से लाठी। अब बताओ, व्हाट लॉजिक विल दिस पीपल पुट इनटू दैट? कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे? क्या एक अंधा आंख आने के बाद भी वो लाठी लेके चलेगा, बोलेगा नहीं नहीं मैंने जीवन भर इसी के सहारे चला, अब आंख आने के बाद इसे कैसे छोड़ दूं? नहीं, छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा। आप चाहो ना चाहो, आंख आने के बाद तो वो ऐसे ऐसे करते करके तो नहीं जाएगा, टटोलते हुए तो नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जरूरत नहीं रही उस चीज की। उसी तरीके से हम अपने कर्मों को जो टटोलते हुए जा रहे हैं अंधकार में, क्योंकि अंधे हैं। जिस दिन आंखों का उजाला आ गया, जिस दिन ज्ञान चक्षु खुल गए, उस दिन मुक्त। It is so true because after I have started doing this, so I think how many days left for that, what we are doing for the 21 malas? I think Kamlendra ji had worked out some 1,25,000 japs, no? He had यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी जाप कंप्लीट कर चुके हैं। complete. How complete? But I दो think दो ढाई ढाई लाख के जाप कर चुके हैं इन दिस लास्ट 1 month टाइम। 21, no, on one every day. they have exceeded everything. They have just their only one agenda throughout the day is that. Oh, okay. I've been doing 21, but I think कोई नहीं। See, remember that story of that tree, na? Grow at your own pace. I'm happy to. I'm very happy that I'm doing 21. So it's a very big achievement for me, and I'm just feeling happy. It's more than an achievement. I'm just feeling very happy doing it because somehow I feel that when I'm doing it and after it is done, I just walk around like I'm blank. I Okay. walk around like I don't have a care in the world. So that has been my. So, Can you see that blind person has gotten eyes now? वो तो आ गया ना, आँख ही आ गया मुझे. So that's what I say. Now, रेवती जी, you narrated something a little bit ahead. थोड़ा समय पहले आपने कुछ narration किया that you wanted to share. And then you said there is no possibility of a monkey coming to your place and ये coincidence हो सकता है, right? I mean, it's like if you think logically, so it could be a coincidence. For those logical people, I can give you a sadhana of 60 days. If you do that, it will appear again. Then, and it will not appear as a monkey, it will appear as is. Then, are they willing to do that? Do have that courage to do that? उतनी क्षमता है उनमें करने के लिए। मैं 60 दिन में निकाल के दिखा दूंगा, आपके सामने खड़ा करके दिखा दूंगा। It will come in front of you. कर लोगे? I am very happy to do it, but I actually saw it, no, without doing anything, he came to my house. No, it is not just without doing anything. No, meaning it's like I went down to the building to ask the watchman, आपने किसी को देखा? They also saw. Meaning it's not that it was my illusion. So I thought, it was an illusion. No, it's okay. It can be a coincidence that बंदर कहीं से आ गया. I'll tell you one. वो सामने हनुमान मंदिर है, वहीं से आएगा, और कहाँ से आएगा? But if those people, those who have that question, ना उनको एक बार मिलाना मुझसे, और मैं जो बताऊंगा 60 days करने के लिए कर लेंगे, और उसके बाद वो 60 दिन के बाद अगर आके वो मना कर दे तो बात करेंगे यहाँ पे. Then this is. I wish I could have taken a photograph. It was nicely sitting on outside. Not needed. I was so excited that I forgot, and then it ran away. It jumped. So you also told one more thing, that you have been a Hanuman Bhakt, right? Okay. After I came here. बात बताओ, ये हनुमान चालीसा लिखा किसने था और कब लिखा था? ये तो आपने जो सिखाया जिस तरह से करना है, I've been sharing that video with so many people that this is the way to do Hanuman Chalisa, that मुझे वो करते करते मैं इतना musical हो जाती हूँ सुबह सुबह, that I think for about 45 minutes I'm doing only that, and how am I getting the time? I'm just thinking
without doing that, I can't step out of the house. So I'm so blessed. When are you going to do that Bajrang Ban ka thing also? You were supposed to teach us how to do the Bajrang Ban, no? साधनाएं एक एक कंप्लीट तो कर लो. वो तो कर रहे हैं ना, लेकिन अभी it gets. क्या होगा जानते हो रेवती जी? जब मैं विज्ञान भैरव तंत्र कर रहा था, तो जब साधनाएं दी गई, वो साधना सिर्फ 7 दिन तक चलती थी. संडे के दिन साधना बदल जाती थी, क्योंकि लोगों को उससे कुछ बेहतर मिल जाता था, फिर उससे कुछ बेहतर मिल जाता. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज द थिंग दैट दे यूज्ड टू प्रैक्टिस, दे स्टार्टेड फॉरगेटिंग दैट आल्सो. वो धीरे धीरे छूटने लगा. So that day I decided, like, let them complete one sadhana to start another, or else it's like खिचड़ी बन जा रहा था. Whatever. So complete. But I really want to know how to recite the Bajrang Ban also. Okay. So, and one last thing I want to say. I had the opportunity of I'm going to the Shiv temple every day. So Sunday को बहुत भीड़ होती है वहाँ पे जहाँ मैं जाती हूँ. It's called Baneshwar temple. It's a very Jagrut temple over here. So बहुत भीड़ होती है. मैं थोड़ा I went at a time when I thought there'll be some 50 people sitting there, but there was not a soul over there that day for some reason. I went there and I asked that Pandit over there whether I can lift that. I wanted to, clean. I wanted to do some seva there. So I said, can I lift that snake, put it somewhere and then do the... He actually allowed me to do that. And for 15 minutes, there was not a soul in that temple. Otherwise, if somebody had told me this some time back, I would have probably said, so what? Ho jata hai, so what? Nobody was there. But I think I'm drawing a meaning into everything that I do nowadays. I'll tell you one thing. When we draw meaning about life, we never doubt that. When we draw a meaning for spirituality, we doubt it. Because this doubt has been inculcated in our minds. That somebody told कि ये सब ऐसी बातें हैं जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ऐसी बातें हैं जो ऐसा नहीं हो सकता. See, these are those people, those who have not experienced that. For them, these are just stories. But for a person who has experienced it on his own, so what would happen to such people? See, can you deny that sugar is sweet? No, because you have tasted sugar, so you can say, no, sugar is sweet. Salt is salty. If the world says, no, sugar is salty, would you agree? लोग मुझे अक्सर पूछते, रेवती जी आप मान लेते हो सब कुछ? मैं बोला मैं सब कुछ मान लेता हूँ. बोले क्यों? बोला उसको जानने के बाद मानना कुछ बाकी नहीं रहा, सब मान लेता हूँ मैं. आप कुछ भी बोलो मैं मान लूंगा. Because what is left more than that? ओ जिस दिन आंखें खुली ना, दिन सब दिख गया. और जो अंधेरे में बैठे हैं ना, उनको देख के बस कोशिश रहती है खींच के बाहर लाने की, या तो उनके सवाल, या उनको कभी कभी देखता हूं तो मुझे लगता है कि अच्छा कभी मैं भी वहां हुआ करता था. I was there sometime. So thank you. I'm so blessed to be here, and my experiences are increasing only every day. So no, that's what I say. Like आपने जो सवाल पूछा था ना, मैंने इसीलिए पूछा आपको कि हनुमान चालीसा लिखा किसने था और कब लिखा था? When was it written? Do you have any idea of it? It does not come from Treta Yuga. It comes from Kali Yuga. कलयुग में ही लिखा गया है. संत तुलसीदास जी. इतनी शक्ति है उसमें. मतलब when I read it also, I feel so empowered. I feel कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. I actually feel like that. And I feel जो नहीं है चलेगा, नहीं है चलेगा. It's a scene of being blank. वहां पे लास्ट में एक दोहा आता है ना कि अगर आप if you are stuck in life or you are in a jail also, वो भी मुक्ति करा देता है, right? So there actually तुलसीदास जब ये लिखे, he was in a cell, actually he was in a jail. उनको एक डंजन में फेंक दिया गया था. So वहां बैठ के उन्होंने
ये रचना की हनुमान चालीसा की. And you know what happened? He started writing, and finally, when he was done, the more and more write-ups he used to write, more and monkeys used to appear. और जैसे जैसे ये 40 दोहा जिस दिन कंप्लीट हुआ, इतने बंदर आ गए और इतना परेशान किया. वो आस पड़ोस के जितने लोग थे, जितने सैनिक थे, उनको इतना परेशान किया. सब उनको भगाने लगे. सिर्फ एक बूढ़ा बंदर बैठ के खिड़की के पास सुनता रहा इनके दोहे. और उन बंदरों ने इतना उपद्रव मचाया कि लास्ट में तुलसीदास को छोड़ना पड़ा उस जगह से, क्योंकि बंदर हटने वाले लोग नहीं थे वहां. This is not story, this is history. What would you call that? What और जैसे ही उन्हें छोड़ दिया गया, बंदर चले गए. So it could be a great coincidence then. Who designed this coincidence? That means even if it is a coincidence, somebody designed it. Who? Can you see the logic fails? See, we all logically know H2O makes water. Can you make water? Why? Logically do it. No, right? Why? आपको पता है कितने हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, ऑक्सीजन के क्या मात्रा होनी चाहिए. पानी बनाओ ना. नहीं बना पाते. सो सीधा सीधा फॉर्मूला जानने के बाद भी पानी नहीं बना पाते, कर्म को क्या जानोगे? So see, when you challenge those people, what will happen is those people will take it as a challenge, but they will act in a very different way. वो तर्क नहीं होता, वो वितर्क हो जाता है. But there are things that can be done. वो करने को तैयार है तो हम दिखाने को भी तैयार. मैं क्यों दिखाऊं भाई? तू करना, तू खुद देख. फिर मैं दिखा दूंगा, तू बोलेगा नहीं ये इंद्रजाल था, माया जाल था, भ्रम था. तू खुद करना. They'll think it's hypnotism. इट्स नॉट हिप्नोटिज्म, बिकॉज जब तुम खुद करोगे फिर पता चल जाएगा. कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा. और कोई बड़ी साधना नहीं है, सिर्फ 2 लाइन का मंत्र है, उतना काफी है. बता देना अगर कोई करना चाहे तो. ठीक है. Thank you. धन्यवाद. तो लाठी जरूरत नहीं है ना अभी. चलो. अदिति जी. हर हर महादेव. हर हर महादेव. एक्चुअली सवाल मेरे वो आंसर में खो सकते. हाँ वो तो है महादेव. एक फेज ऐसा ही है कि सवाल में आते हैं लेकिन उनका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहता है. वो दे आर जस्ट लाइक विजिटर्स, दे आर जस्ट पासिंग अवे, पास अवे हो जाते हैं. बट स्टिल अगर कभी स्टक हो जाए तो वो याद कर लेंगे जब जो आपने आंसर किया है, ये सोच के जानने की मुझे आज इच्छा है. तो लास्ट 2-3 सेशन में आपने एक बार बोला था कि वो स्पिरिचुअली स्टक मींस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली? स्पिरिचुअली हाँ स्पिरिचुअली स्टक होते, वो भी एक फेज ऐसे आपने कुछ बताया था मुझे थोड़ा डाउन सा. टाइम ऑफ इंटरनेट है. ऐसे स्पिरिचुअल डाउन टाइम. हाँ महादेव. तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि मीन्स ये भी एक प्रोसेस, एक फेज जैसे आपने कुछ बताया था. तो उसके बारे में थोड़ा मुझे जानना है. और दूसरी बात ये कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है महादेव, बट ऑल आई कैन डू इज I don't have words. I don't have the perfect words. महादेव महादेव मैं बस कह सकती हूँ क्योंकि आप जो महादेव सिखाते हो शायद वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी उनके नसीब में भी नहीं था, ऐसे मैं कहना चाहती हूँ. क्योंकि
still they are doing their sadhana in Himalayas. I don't know, मीन्स उनका वो जो उनकी जो रास्ता है उनके मोक्ष का ऐसा क्यों है, क्या है, बट जिस तरीके से आप आत्मा परमात्मा का आपके बारे में हमको मीन्स ज्ञान देते हो और समझाते हो, if it is so simple and we are experiencing while sitting at this comfortable house, तो अगर उससे जुड़ना या उसका अनुभव, उसका साथ रहना इतना आसान और इतना अच्छा है, तो ये सब मीन्स ये हिमालय में इतने सालों से बैठ के ये सब मीन्स क्या हो रहा है उनके साथ, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो भटके हुए हैं या व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद देम, मीन्स क्या है, क्या उनका मीन्स वो जो, बट सम ऑफ देम आर रियली हैप्पी आल्सो। अघोरियों को जब देखते हैं तो दे आर क्वाइट हैप्पी आल्सो, बट व्हाट एग्जैक्टली दे आर मीन्स एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो, तो ये जानना है मुझे। और एक सवाल है, इसके बाद पूछती हूँ। चलो, इसका एक सरलतम उपाय देते हैं आपको, बहुत सिंपल आंसर देता हूँ। Many a times this question appears in front of us कि इतना आसान है क्या, इतना आसान है क्या फिर अगर क्योंकि अदिति जी, लेट मी कवर अप ऑल द क्वेश्चंस दैट माइट अपीयर इन अदर पीपल हेड एज वेल। ठीक है, जो जो सवाल आ सकते हैं तो उसको एक ही बार एनकाउंटर कर देते हैं एंड विल किल इट। सो मेनी अ टाइम्स वी जस्ट थिंक क्या यार, सब घर बार छोड़ के जाके हिमालय में 600-600 साल, और आप बोले 4-4 हजार वाले लोग भी है वहां बैठे हुए हैं। ज्ञानगंज में गए तो वहां पे लाइक सिद्धस आर स्टिल सिटिंग देयर एंड वी हैव हर्ड अबाउट सो मेनी सिद्धस एंड बाबाज एंड गुरुज एंड ऋषिज एंड मुनीज एंड ऑल दोस थिंग्स। उतना तो पार्वती को 10-10 हजार साल का तपस्या करना पड़ा, हमारी उम्र उतनी नहीं होती, फिर हमारी ये साधना में हमें कैसे मुक्ति मिल जाएगी? So I will address from here, then I will reach out to those people. Okay. The problem with all of us is we think we are a beggar in the field of spirituality. हमें अक्सर ये डाउट आता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में भिखारी समझते हो, as if this is the first time you have started doing the sadhana. Yes or no? जब ऐसा लगता है, अगर आपको नहीं लगता, नहीं, अगर आपको नहीं आता तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब आप पूछते हो ना कि इतने आसानी से कैसे हो सकता है, नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, you see I am talking about all the people. कहीं ना कहीं इनको ये सवाल आता ही है, आप मानो या ना मानो। और जब आपने मुझे पूछा कि what is getting stuck in spirituality, this is what is getting stuck in spirituality. Yeah, Madhav, but it's not, I'm not asking from my point of view. While looking at these all Rishiminis who are sitting in that Himalayas, I feel like, are they stuck somewhere? Means मुझे ऐसा लगता है कि we are so blessed that we have you. Absolutely. तो उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था, इसलिए वो stuck है. I got it. See, from your perspective, you are very clear, but there are certain people, those who have that question. So I'm addressing from this point, then we will go there. Because जब मेरे खुद के अनुभूति में आ जाएगा, तब मुझे दूसरों की अनुभूति के बारे में सुनने में I can make okay, I understand now, or else it is just a story. So ये अनुभूतियां जितने लोगों को होती है, like all the people that they think like, how is it possible to be so easily sitting in the comfort of my house with the AC on, with a popcorn on my side, enjoying that and still getting moksha? How is it possible? नहीं आभाजी, इतना कैसे हो सकता है? ये जो सोचते हैं उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या ये आपके पहला जीवन है और क्या ये आपकी पहली साधना है। अगर ये आपकी पहली साधना होती तो आप तो यहाँ कंफर्ट में नहीं बैठते थे। शायद हो सकता है आप भी कंकर पे चले हों, शायद आप कांटे पे सोए हों, शायद आप पत्थरों में, व्हाट आई कॉल इट, अश्विन जी एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करता हूं, जैसे बोलते हैं ना कि द वूम्ब ऑफ ए मदर, मैं कहता हूं द वूम्ब ऑफ ए रॉक।
You might have been into a womb of a rock. लोग कहते हैं womb of a rock क्या होता है? कुछ नहीं होता, केव होता है. अगर आप केव के अंदर जाके बैठते हो तो वो क्या है? गुफा क्या है? पत्थर, ऐसा पत्थर जिसके अंदर आप बैठे हो, मानो माँ का वो जो कोक है उसके अंदर आप बैठ गए. So that's what I call as the lap of the mother in a stone. तो ये आपका पहला साधना नहीं है, ये आपका पहला जीवन नहीं है, और ना ही आपको ये पता है कि इतने आसानी से क्यों मिल सकता है. क्योंकि इतने आसानी से मिलने का कारण यही है कि आपकी साधनाएं तीव्र हो चुकी होंगी. Because you might have traveled this far. For example, let's say somebody, I don't know whether this applies or not because अक्सर पास वाले लोग नहीं जा पाते. For example, let's say the people living near Kedarnath and a person living here in Hyderabad. The person who is just a kilometer away and a person who is hundreds of kilometers away, कितना दूरी, जिसका दूरी कम है उसको पहुंचना आसान है नहीं है. हालांकि अक्सर ये होता है कि पास वाले जाते नहीं है, वो अलग बात है. दूर वाले पहुंच जाते, पास वाले नहीं आते. But in this case, let's say you're running a race. One person has to just take one jump and you have to run a mile. Who will reach fast? जिसका रास्ता छोटा है. तो वैसे ही शायद आप दौड़ चुके हो. You have completed your race. That's why you are sitting here. That's why these simple appearing things create so much of meaning within you. इतना सारा, इतने आसानी से कैसे समझ लेते हो आप ये सारे गुह तथ्यों को? Means the most toughest questions handled so easily. How? It's all your grace, man. It's all evolution. When you were a fish, he talked as a fish. When you were a tortoise, he talked like a tortoise. When you were a boar, he talked like a boar. When you become a human, he taught like a human. And when you are becoming this, he's teaching you that. It's just trying to speak the language that you understand. And you remember that sadhana that I spoke of a long time ago? A woodcutter was on the cutting tree and it became evening. And at that time, Aghori came with a dead body on his shoulders to do a sadhana. And by looking at it, he became fearful and he climbed up the tree. And then he was looking at it, and the Aghori kept the body and sat on it, lighted the fire and the mouth of the corpse. And they started chanting the mantra. By listening to that mantra, this woodcutter is still sitting on the branch and listening to that mantra. And suddenly a tiger comes, catch holds of it, the Aghori, and takes it away. And then the dead body is lying there. Then this person, out of nowhere, he just thinks of like, oh, I know the mantra now. Let me give it a try. He just comes down and just chants 7 times. And Kali appears in front of him. Only 7 times. 7 बार मंत्र जाप करा और उसके सामने साक्षात मां प्रकट हो गई. और तब इसने वो पूछा कि ये कैसे हो सकता है? वो तो इतने घंटे से मंत्र पढ़ रहा था, तुम नहीं आए, और उसे तो शेर खा गया, और तुम मुझे देखो, मैंने सिर्फ 7 बार मंत्र जाप किया तो कैसे मेरे सामने आ गई? Then what did he said? What did she said? She said, तेरा सिर्फ इतना ही बाकी था. Only 7 chantings away. You can say, how can just 7 chantings can make that happen? Hello, अगर लॉक में 4 नंबर है ना, 3 नंबर सही डाल दिए, लास्ट नंबर सही नहीं डाले तो ताला नहीं खुलता है. So all that you need to is that last number to click. And the moment you click that last number, it opens. Similarly, how do you know what is left for you? Might be your sadhanas have been intense. Might be that's why we are sitting in the comfort of here or traveling in a train and still listening to all that. That's how you know it. Right? You made it so comfortable, man. I mean, anywhere we can connect. Means I didn't find a place or a situation or a thing, I guess, where I can't connect. It's impossible that not connected. That's what I say, Aditi ji. That's why
people won't understand what I say. आपको लगता है कि अरे पागल है क्या, समझ नहीं पा रहे, इतने आसानी से समझाया जा रहा है. नहीं नहीं, they won't understand. I speak at a very high decibel, you know. उनको समझ में नहीं आएगा. इतने आसानी से बताया जाता है कि समझ में नहीं आता. जैसे भगवान आपको चारों तरफ घेर के रखा है, दिखाई देता है क्या? फिर इससे आसान क्या हो सकता था? You are surrounded by it and you are still questioning it. So क्या हो सकता है? Now just think of it. Now you have traveled this far, looking at those people. What is their story? That is called as getting stuck in sadhana. Means some are still trying to experience with the power of that energy. Still there are people, those who want to see whether this works or not. And there are still some people, those who say, सब कुछ तो मिल गया, but if I don't know who I am, then their search begins in a very different way. And there are people, those who have transcended this, and they said, I have gotten my wings now. What about the other people? Why can't I teach them flying? So they stay back. ऐसा नहीं है कि सारे रुके हुए हैं. कुछ लोग आपके लिए रुके हुए हैं. कुछ लोग इसलिए रुक गए हैं अपनी साधनाओं के साथ ताकि आप मुक्त हो सको. और जिस दिन आप मुक्त हो गए, आप उनसे मुक्त, वो आपसे मुक्त. So might be some people get lost in that way. Some people gain greatness in that, name, fame, money. Some people become worse people than what they were. And some people just attain it and they work for your benefit. And some just leave the body that very moment. So whom would you call great here? Nothing is to be called great, because the one who has realized, Journey. for him there is no greatness left. आप चाहे कांटे के ऊपर बिठाओ या छत के ऊपर, how does it matter? So that's how Aditi ji, for those people, उनकी साधना बाकी है. शायद पिछले जन्म में आप भी हिमालय में बैठे होंगे, किसको पता है? How do you know? So when you are here, all that I can say is, when a single chirping of a bird becomes the voice of the God whispering in your ears, when just a drop of water falling from the sky looks as if a grace of the God, when you go to a crowded place and you don't find anyone except you, when a monkey shows up at your window, or you just sit and smell the aroma from nowhere, suddenly you listen to a song and you start crying, I believe you are close to your home. Because कैसे हो सकता है कि हर एक शब्द में आपको वही सुनाई दे, हर एक दृष्टिकोण में जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी दृष्टि में आता है वही बन जाए. मेरे विचार वही बन जाते हैं, मेरी आंखें वही बन जाती हैं, मेरी सांसें वही बन जाता है, हर एक ध्वनि उसी का नाम लेता है. तो कहीं ना कहीं मैं तो मंदिर के पास ही हूं. मंदिर से दूर वालों को घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती, उसकी खुशबू पास में नहीं आती, वो भगवान दिखाई नहीं देता. लेकिन जो मंदिर में बैठा है उसके भगवान दिखाई भी देता है, आकार साकार निराकार रूप में. साथ ही साथ उसको मंदिर में जो खुशबू चल रही है, वो खुशबू भी उसको स्मेल भी आता है. He feels the vibrations of the temple, he hears the bells of the temple, the chantings, the mantras, the songs, the prarthanas, everything he is able to hear because he is sitting in the temple. Now tell me, where are you sitting? आपको क्यों सुनाई दे रहा है ये सारी चीजें? आपको क्यों ये सब चीजें दिखाई देने लगी है? आपको क्यों हर एक छोटे से चीज में उसका वाइब्रेशन महसूस होता है? Why do you feel that I am absolutely wrapped around with it? Where are you? So now tell me, are you a beggar in the path of spirituality?
I told you some days back that I'm feeling like a blessing. Yeah. तो कहीं बैठे होंगे इसका मतलब. Make sense? But I have some thought, महादेव, कि अगर आपने ये जो हम लोगों को बताया है तो ये उन तक भी जाना चाहिए ना महादेव. They must be stuck. कोई उन I They don't have know. their own time. They have chosen a path. You have chosen a path. But I'm feeling like everybody See, should their get that. experience still counts. They want to experience everything. So, see, it is his benevolence. You remember what I said last Sunday? You are the eternal Mm. love of God. Yeah. So you have discovered that you are the essential eternal love of God. You are not just thrown away from God. You are not discarded by him. आपको किसी ने फेंक नहीं दिया कहीं से. You are that. Or I was talking to someone and I said this. This is so profound actually. Again, like I believe I was. So when people call me with a name called as you, people call me with a name as Mahadev, right? That's not my name. My name is Manas anyways. But you call with that name as a Mahadev. Then some people said, किसी ने मुझे पूछा कि तुझे महादेव महादेव बुलाते हैं, and must be feeling that ego आ गया होगा ना तुझ में. And I laughed and I said, what a funny thing. तुझे उसमें ईगो दिखाई दे रहा है, मुझे उसमें उसका प्यार दिखाई दे रहा है. You see the ego, I see the love of that. आप सोचो, बोला कि कैसे? मैं बोला कि how can someone love someone so much that it is ready to give its name to it? वो तुमसे कितना प्यार करता होगा कि अपना नाम तुम्हें दे देता है. कौन अपना नाम किसको देता है भाई? आप धन दे सकते हो, दौलत दे सकते हो, अपना नाम किसी को नहीं देते. उसने उसका नाम मुझे दे दिया तो कितना प्यार करता होगा. What could be that love? I don't have any doubts on that. All that you have to become is just. We don't have any doubt that Mahadev, you are not different than that name. See, वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा दिखता है. The one who is got blind in the month of this Ravan month, all things that he sees is green, right? और हम शिव के अंधे हैं, इसलिए हम सबको शिव शिव दिखाई देता है. सावन के अंधे को हरा देखने दो, हमको शिव दिखाई देता है. So how could life be better than this? It's like every single moment, it's there. This is Absolutely feeling. no, I don't know anything else apart from that. Yeah. Nothing else. So Aditi ji, as you have prayed, may all of them also realize this simple thing. आप जानते हो शिव का एक पर्टिकुलर क्वालिटी क्या है ना? वो ही इज कंप्लीटली फ्री. वो अपनी इच्छा से करता है. वो किसी के बोलने से, किसी के बांधने से नहीं करता है. वो स्वतंत्र है. उसके लिए एक शब्द जो इस्तेमाल किया जा सकता है शब्दावली में, वो स्वतंत्र है. वो स्वतंत्र है काल बनने के लिए, वो स्वतंत्र है शंभु बनने के लिए, वो स्वतंत्र है भैरव बन के संहार करने के लिए और शिव बन के जहर पीने के लिए. वो स्वतंत्र है. उसे आप जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हो वो आपके सामने उसी रूप में प्रकट होने को तैयार है, क्योंकि वो स्वतंत्र है. एक अघोरी उसे स्मशान में देखना चाहता है तो वो स्मशान में खड़ा हो जाता है. कोई उसे कैलाश में देखना चाहता है तो वो कैलाश में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो निराकार भी है और आकार भी, मुक्त भी है और बंधा हुआ भी. वो घोर भी है, वो अघोर भी, क्योंकि वही है
जो स्वतंत्र है। और यही स्वतंत्रता आप अपने अंदर जब महसूस करने लगो, can you see you are bound and free at the same time? Yeah. You can be agitated and saintly at the same time. You can cook a wonderful meal and you can cook poison also at the same time. Can you see what Shiva is? उसे एक चीज से नहीं कह सकते। जैसे आप बोलोगे एक चीज, वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट भी बन जाएगा। He'll also become the opposite of it. So that's why it is such a wonderful thing कि वो स्वतंत्र है, उसे बांध नहीं सकते कि तू ऐसा ही दिखना चाहिए, नहीं। So all that is. Go. And if you start feeling like that, if you start living like that, if you have a calling again and again from him, तो Every ऐसा लगता है second it's calling. I don't know that which moment is his calling is not there. Every moment. तो इंतजार कौन कर रहा है? Who is waiting exactly? No one. You think that I am running. ना। कहीं उल्टा तो नहीं कि उसका बुलावा आया है, आप कहाँ चल पाते हो? Might be his calling. हाथ ऊपर कर दे, चलाना है, दौड़ाना है, लेटाना है, जो करना है कर देता है. Really don't have any doubt. So what is the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जानना था कि जो सप्त ऋषि या फिर हम लोग जो गोत्र, हमारा जो गोत्र होता है, तो वो गोत्र ऋषियों के एक एक ऋषि का एक एक वो है, तो वो एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, और ये उसकी रचना के पीछे क्या क्या नियोजन है, और व्हाई देयर इज डिफरेंशिएशन, फॉर व्हाट पर्पस दैट डिफरेंशिएशन इज देयर. ये गोत्र का एक कुछ अलग स्पेशलिटी है, और ऐसा कुछ है क्या कि वो ही ऋषि हमारे गुरु रहे होंगे उस समय से, तो what exactly that relationship with that ऋषि? The relationship is very simple. You are coming from the same lineage. That is what means why there is differentiation, and means why they वो See, सात वो जो है, see those, there were 7 rishis out there, right? हाँ. And they came to know the ultimate through Shiva. And when they started their own clan, because that's what it was said, right? You have to go and spread this knowledge. And at the same time, this knowledge should go to, see, वो जैसे 5 उंगली होते हैं ना हमारे, all have a very different way of acting. Your little finger cannot act like your thumb. करके देखो नहीं चलेगा. So every finger has a different way of doing that. So जब शिव ने जो रास्ते बताए उनको, the kind of wisdom that was passed on, they became master of one by one of it. जो जिस तरीके के साधना में सिद्ध हुआ, उसके जो lineage आए, अगर आप ये पता चल जाए कि उसने कौन सी साधना की थी, and you start doing that sadhana, it would be very, very easy for you. Because it is there in your DNA. But महादेव, हम तो महादेव के भक्त हैं, तो वही सब बंधनों से तो मुक्त है ना, मुक्त है, तो why need to stuck? I'll tell you something, Aditi ji. Have you seen people with wide open eyes at times think like, मैं थोड़ा आंख बंद करके चल के देखता हूँ कैसा लगता है कि नहीं? अच्छा नहीं लगा कभी? अभी प्रूव करता हूँ, आपको भी लगा है. बचपन में याद है पट्टी बांध के आंख पे घूमते थे, कहाँ गया. But do you do that? मैंने क्या कहा, वो स्वतंत्र है. वो आंख वाला भी हो सकता है, वो अंधा होके अपने आप को भूल भी सकता है और अपने आप को ढूंढ भी सकता है. So similarly, जैसे वो चलते हुए आंख होते हुए भी कभी कभी सोचते थोड़ा आंख बंद करके चलता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है. So similarly,
We are here, coming that far to this place, rediscovering our pathway back. So all these came as a different kind of wisdom through which, अच्छा जैसे मैंने अगर 7 पेड़ लगाए, ठीक है, of different fruits, एक मैंगो, एक एप्पल, एक कोकोनट, and you name the 7 fruits. All of them will bear fruit and all of them will have a seed. And if I utilize that seed and put it into the right place, what will it grow again? Same. Same thing. So these are the pathways. So through that pathway, when we have come from their lineage, means उनके जो वंशज हुए, हम उन्हीं के वंशज हैं. But ultimately, आदित्य जी, मैंने ये क्यों कहा कि आंख होते हुए भी आंख बंद कर देते हैं? क्योंकि 7 ऋषियों के बारे में तो जाने, लेकिन ये 7 ऋषि आए कहाँ से, उसके बारे में नहीं पूछा. वही तो सवाल है और मेरा. जब आपने ये कहा कि हम तो शिव के, हाँ, तो उनके आगे एक स्टेप आगे ले लो, वही मिलेगा. वही तो फिर why we need to choose that particular part of that particular rishi? No. भाई शिव सब कुछ है हमारे. That is again now in this case the karma works. Based on your karma, you come to a particular clan. And when you come into that particular clan, because of the kind of puja, dhyan and everything that people have done, you also fall into that place. आप भी वैसे ही साधनाएं करना शुरू कर देते हो. और उसी से आपकी साधना के वजह से आपका मुक्ति का मार्ग के लिए वो सहायक होता है. महादेव, हम लेडीज को तो शादी से पहले एक अलग गोत्र होता है, बाद में अलग गोत्र होता है, तो हम कहीं के कहा के एग्जैक्टली. So now realize it, na? Why did you took the form of a female? Can you see जो मेरा टाइटल है मिश्र? Why? मिश्र का मतलब क्या होता है? You are talking as a female, I'm talking as a male only. मिश्र का मतलब ये होता है कि who has done all kind of sadhana, right? Yes. So can't you see you people are more blessed that आप 2-2 साधनाएं एक ही जीवन में कर ले सकते हो? कभी सोचा इस बारे में? नहीं. You see the problem, you see the war, you don't see the magic. कि आपने देखा है कि एक ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, ऐसी भी लड़कियां हैं कि जिनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई और किसी की ज्यादा उम्र में हुई. Yes or no? Why so? Can't you see the magic behind it? The magic is उनकी उस स्थिति में अगर साधना उन्होंने कंप्लीट कर दी, they will move out. 7 मंत्र बाकी हैं, 21 साल बाकी है, 27 साल बाकी है. आपने उस जगह की साधना की, फिर उसके बाद दूसरी जगह गए, वहां की साधना करना शुरू किया. और साथ ही साथ when you are moving out there, can't you see the power that you people have? You are carrying one kind of sadhana to another family, so you are adding another energy to that family. You people become the one who goes and recreates the world there. अपने आप को छोटा मत समझना. आपकी साधना के सामने हमारी साधना कुछ भी नहीं. लेकिन हमें पता थोड़े ना है. हम तो ये सोचते हैं कि अरे यहाँ शादी करा दिए फिर उधर चले गए. नहीं 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 नहीं. See that as your sadhana. I don't know महादेव, but एक शिवभक्त तो क्या आगे और कुछ दिखता ही नहीं महादेव. ये कितनी साधना, ये क्या. Can you see? No need to count also, and I don't need to count all this. So let me बस शिव के tell you. भक्त है भाई, इतना ही बस है. That's enough na. Now just think of. Yeah. If somebody who is a Shiv Bhakt or Narayan Bhakt or any Devi Bhakt, whatever it is, कोई एक ऐसा सिद्ध पुरुष किसी के घर में पैदा हो जाता है, would their parents even think about their karma anymore? नहीं ना. So that means your coming into that home itself make sure the liberation of others. So be that. I always look into that कि मैं क्या कर सकता हूँ, what am I, और मैं किसी के साथ जुड़ा हूँ. अंत में there is something that I have written कि
सवाल और जवाब के खेल कई खेले, सवाल और जवाब के खेल मैंने कई खेले, लेकिन हर एक सवाल के अंत में उत्तर ये आया जिसमें तू मैं बन के मेरे सामने आ गया था. You just came in front of me as me. So Exactly. can you see, like, it's not about finding a God, it's about becoming that. Mhm. Just become that. Yes. And then you see, you don't even have to think where I have taken birth. मैंने कल एक बहुत एक भयंकर बात किसी से कह दी, उसने कहा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं. मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, भयंकर बात सुनो. वो कहते हैं मैंने, आप मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा नहीं करे. मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं किया, लेकिन मैं बैठ गया, वो मेरे चारों तरफ घूम गया. I just sat there and it did the pradakshina around me. Are you gone crazy? I said, absolutely, why not? तुम्हारा प्यार उतना ही है कि तुमको उसके चारों तरफ घूमना पड़ता है. मेरा प्यार ऐसा है कि वो मेरे चारों तरफ घूमता है. What is better? Just think of. Yes. If you are in deep love and you have to rotate around someone, that is a better love, or you are sitting and somebody is running behind you. Which is a better love for you? ये छोटी बुद्धि में ना वो जाएगा भी नहीं. So that's how. See, why do you want to complicate? I make No, man. Actually, I am telling you that I'm sorry, but I am saying that आपने जो स्वतंत्र का जो गुण उसका जो बोला है ना, I feel like I am that. I'm sorry, but I am taking the privilege that I am saying. भाई, Then why? See, अगर वो स्वतंत्र मैं- है तो वो आप क्यों नहीं बन सकता? अगर आप I'm स्वतंत्र feeling हो Yes. तो आप वो क्यों नहीं बन सकते? उसने मना किया है कि नहीं, तू ऐसा नहीं बोल सकता. That you cannot say that I can rotate around you. It cannot say that I am running behind you. नहीं 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 नहीं. Even if you have not told, I will prove it that you have told it. I'm actually feeling it. So enjoy that life then. Okay. Thanks. Yeah. हर हर महादेव. देखे सारे कितने अंधों की आंखें खुल जा रही है, सब लाठी छूट जा रहे. चलो. Thank you, Narayana. नारायण आज रेस्ट ले रहे, सो वेट. और वैसे भी लाइक लेट मी जस्ट गिव ए सिंपल इंफॉर्मेशन बिफोर आई मूव ऑन टू जनेश जी. ओम पर्वत आदि कैलाश dates have been fixed. So September 18th we are starting. September 18th or might be a day ago before that. 16 or 17 हमको शायद निकलना पड़ेगा. The details of everything will be coming tomorrow because they are still working out on the itinerary part. Okay, देख लेना. अब सौम्या जी और चिदविलास सोच रहे हैं अभी तो घर पहुंचे नहीं, दूसरा फिर पैकिंग. और अदिति जी आपका भी वही हाल था ना, अभी जाके आए ना. ओके चलो. सो द डिटेल्स विल बी फॉलोइंग, हरिभाई विल बी शेयरिंग. एक लो जिस जो एनीवन हु कैन जस्ट फाइंड ए पाथवे टू. ओके. Yeah, the day you say that you are on vacation, you will go crazy with by moving around, right? So Janesh ji, please unmute. मतलब ऐसा लग रहा है कि अब क्या पूछे. मतलब मन होता है बस यहीं बैठे और उसको घूमने दें हमारे चारों तरफ. बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम. गुरुदेव, अंग्रेजी में कहावत है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. Wow. And power can be anything. Power Can is be anything. It is just a manifestation of something which is powerful. That's it. Okay. अब उसका डर भी है. अब मेरा संदर्भ यहाँ से आया है Okay. कि
since quite some time I am observing Mhm. कि कुछ सोचा हो जाता है, कुछ समझा हो जाता है। अब उसका बहुत डर लगता है गुरुजी। साइड इफेक्ट्स ऑफ साधना है। मुझे नहीं मालूम कि वो साइड इफेक्ट ऑफ साधना या क्या है। और अभी ऐसा हो गया है कि मैं समझो सहज बात भी किसी से करता हूँ तो बात की गहराई इतनी हो जाती है कि अगला बोलता है यार तू सीधा बात करना, ये इतना डीप में जाने की क्या जरूरत। they अब you मैं they make you as you are alien, right? They don't understand your language अब anymore. जो व्यक्ति मुझे 10-10 11-11 साल से पहचानता है वही बोलता है, वो भी बोलता है तुम क्या सिंपल बात नहीं कर सकते, हमेशा ये क्या कोई भी स्पिरिचुअल एंगल से ही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो मुझे नहीं मालूम मैं क्या हो रहा है। आप क्या हो बट गए द बताता हूँ। प्रॉब्लम, आप क्या हो गए बता देता हूँ जटेश जी अभी, उसके बाद आपका सवाल लेता हूँ। मैंने ये कहा था ना कि अगर एक अंधों का गांव है और उसमें एक को थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे, सारे पकड़ के उसको फिर से अंधा कर देंगे। तो बोलेंगे तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई, तुझे दिखाई कैसे दे सकता है, हम किसी को दिखाई नहीं देता। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। लेकिन गुरुजी मेरे को अभी डर क्या लग रहा है, मैं मेरे अंदर का दिल की बात बताता हूँ। डर ये लग रहा है कि मेरे हाथ से कोई ऐसी सोच ना हो जिससे मेरे और कर्म बंध बन जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने कई बार बोला है कि हस्तक्षेप नहीं करना है ऐसा वैसा। अब कहीं किसी की ये हो के एक फीलिंग आती है ना, एक दया भाव आता है या कभी आ जाता है या रिलेशन है। अच्छा, आई एम ऑल्सो नॉट ऑलवेज कॉन्शियस ना। कई तो चीज ऑटोनोमस मोड में दिन भर चलती है, व्यवहार में भी इधर बिल्कुल भी। बिल्कुल। अब उस वक्त कहीं से समझो मेरे से कोई गलती हो गई ना, तो मेरी वजह से उसको क्यों खामियाना पड़ना पड़ रहा। ओके चलो, सो यू वांट टू से शायद जो भी सोचता वो हो जाता है, तो कभी कोई गलत विचार आ गया तो उसके ऊपर किसी के साथ बुरा हो गया तो क्या, यही नहीं, है? बुरा बुरा या अच्छा जो भी हो, लेकिन वो हम्म। प्रकृति का तो नहीं है ना, मेरे विचार से हुआ। तो मेरे मेरे को वो उसमें नहीं गिरना है। मेरे को उसका बहुत डर लग रहा है। आप फंस गए फिर। आप आपका आपने कहा आपके विचार, किसके? विचार नहीं है गुरुजी। कभी ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आके अभी तो ऐसा लग रहा है अच्छा भी नहीं सोचना है, बुरा भी नहीं सोचना है, जो हो रहा है होने दे। नो। ओके, अब सोचो लेकिन जनेश जी, आप कहते हो कि मेरे सोचने से अगर हो गया तो एक प्रार्थना करो ना, सिंपल प्रार्थना, कि अब से मेरे विचार भी तू ही बन जा। परफेक्ट, थैंक यू गुरुजी। बस बस ये वो विक्टोरिया नंबर 203 में गाना था ना, बिन ताले की चाबी लेके घूम रहा था, आपने ताला दे दिया। बस थैंक यू। धन्यवाद जनेश जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बता नहीं सकता हूँ, आपने मेरे मेरे हृदय से कितना बड़ा शूल चलो, निकाल दिया आपने, शूल निकाल दिया। एंजॉय द लाइफ दैट। धन्यवाद। सो थैंक यू। थैंक यू। धवल जी, कैन यू, आप ड्राइव कर रहे हो, सो एक ड्राइव कर रहे हैं, एक गाड़ी में ट्रेन में बैठे हैं, सो किसका बात सुने? सो धवल जी, हैव यू पार्क्ड योर व्हीकल असाइड? अगर आपने गाड़ी साइड किया है तो हम आपके प्रणाम। सवाल सुन। प्रणाम प्रणाम। हाँ पहले हाँ गाड़ी हाँ, साइड करो। प्रणाम प्रभु। कर दिया कर दिया। ओके गुड। I just reached now. My turn came and I reached. ओके तो प्रणाम प्रभु जी। सिर्फ प्रणाम। दो चीजें क्विकली बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सबका आपका। एक तो आज दोनों सुबह का ही बात है, आज सुबह का ही। आज सुबह ये दोपहर को आज मंदिर से आया तो अचानक ही मेरे को
I felt so much gratitude about you, Prabhuji, and whatever you have done for me. And since almost 2 years, you are teaching all these things to me, and because of the impact has created. So again, I was just reached towards my lift of my flat and then going upwards. At that time, I felt like my eyes were almost wet for this, and it has happened since last few months, couple of times, which is a new experience for me. So once again, from bottom of my heart, thank you very much, and Hariji also. So that is Dhanyavad. the first part. Again, second thing, while I was coming from one client session today evening, I remembered you just now said that when you hear a bird singing or chirping and you hear his voice, exactly the same thing. I was coming today from that one of the GIDC, which is almost 35 kilometers away from the city. I was coming back, and same means it is happening many times, but I feel like it is happening like dine dine navam navam. Every new experience brings, it's like a newborn baby is listening something first time. So today also, I was traveling trees and birds, and when I see towards the skies, even the cars or the rivers, whatever I see, everywhere I see that some elements is there which is all Shiva, and that one parrots from somewhere near the road has given one voice like chirping, and I immediately got focused and say that, oh, he is calling. So this is exactly what you said, that when you hear a bird chirping and you Dhavalji, listen his voice. at times we have to confirm people that we hear. कभी लोगों को डाउट होता है, मैं जो इतने दिन भर में बात करता हूँ, कुछ सुनते हो क्या तुम? Then at times we have to confirm that, okay, at times, okay, this is what, right? And not only that, there is a two-liner song. Actually, I have to write that song yet. But there is a two-liner thing that I've written. As जैसे आपने कहा ना कि क्षण क्षण, हर moment, every moment is a new thing, right? So I wrote it just like this, like Nitya Navarupa Brahma Swarupa He Shiv Shankar Karmo Pe Krupa Akhilananda Vishwaswarupa He Jagpalak Karmo Pe Krupa Nitya Navarupa. Every moment, the one that is, every moment it is new, every moment it's beautiful. So what all you experience is exactly the same thing. You cannot say my experience now is better than yesterday. My experience that I had yesterday is great than today. No. It's all magic. So I believe Dhavalji is entering into his house. So though कोई छोटे बहुत नहीं. So Dhavalji, if you can just, the internet is still getting slower at your end. छोड़ लिया. I'm saying अगर कोई बच्चे को देख लिया या कोई लेडीज को देख लिया तो अंदर से मन को झुक जाता है. My face goes down, मतलब mental eyes goes down,
कि वो देवी Dhavalji, you कृष्ण can हो do one गए, thing. You can मतलब switch off the video अलग ही because हो रहा है। the videos को आप वीडियो आप स्विच ऑफ कर लो because the bandwidth issue हो रहा है शायद आपको। Okay, so by the time Dhavalji returns back, so let me take the question of Ashwin. Is it better? You do one thing, Dhavalji. Hello? Anyways, you are near your home. So if you are near your home, you can get connected to the Wi-Fi so that we can hear you clearly. Okay. So in the meantime, Ashwinji, please unmute. हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम मानस जी। आपको सवाल पूछते हुए देख के मुझे जितनी खुशी हो रही नहीं हो रही, उषा जी तो उछल रहे हैं अपने चेयर पे। मैं 2-3 हफ्तों से ऐसा सवाल, ऐसा हैंड रेज करके फिर लाइक आई एम लोअरिंग माय हैंड। चलो। या मानस जी, आई हैव टू रीइटरेट, अभी बहुत सेशनों में लाइक इन ऑल द सेशन सो मेनी पीपल सेड एंड आज भी बताया सबने एंड फिर से मैं बोला, बहुत लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स चीज भी आप एक सिंपल स्टोरी से ऐसा क्लियरली ऐसा लाइक छोटे बच्चे भी और आई डोंट नो सबको समझ में आए जैसा आप समझाते थे स्टोरी के रूप में। दैट इज अमेजिंग मानस, रियली। आज का हमारा टेक अवे मुझे हमेशा डाउट आता था कि अगर भक्ति है तो ज्ञान क्यों? ज्ञान इतना समझ के, इतना ये करके, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पूरा जाके इतना ज्ञान को समझने का जरूरत क्या है? सो विथ टुडे सिंपल स्टोरी, फैंटास्टिक मानस जी, जो अंधे का स्टिक वाला स्टोरी है। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने मिस किया है उनको जाके फिर से सुनना पड़ेगा कैसे भी, बिकॉज द मैजिक ऑलरेडी हैपेंड देयर। Amazing Manas. Right. And thanks for all this, Manas ji. Really, We'll continue. We might, yeah. Okay. धन्यवाद then. Dhaval ji. Thank you. और कुछ? You have any question? अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। Yeah, तो क्वेश्चन मानस जी, लाइक मंत्र में बोलते हैं कि मंत्र में बीजाक्षर ऐसा होता है, राइट? ओके। तो अगर बीजाक्षर होता है एंड लाइक मंत्रोच्चारण से हमको लाइक वी गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड हमको अच्छा होता है, पावर मिलता है एंड ऑल। अगर मंत्र गलती में गलत पढ़ते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो does it give negative impact? Absolutely. There are that's why they are prohibited. कि तीव्र उसका जो प्रतिक्रिया होता है मींस वेरी वेरी हाईली, जो कैसे कहते हैं ना, इन्फ्लेमेबल काइंड ऑफ थिंग। वैसे मंत्र थोड़े हैं जिनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें से गलतियां हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको मंत्र देने से पहले मैं 50 बार सोचना पड़ता है कि ये वाले का अगर गलती से कोई गलत कर भी देता है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सो आई नलिफाई दैट, देन आई से ओके नो दिस इज गोइंग टू बी फाइन। अगर गलती हुआ तो भी चलेगा। इन दैट केस गलती हुआ तो चलेगा, मतलब ये नहीं कि मैं आपको सीधा सीधा मंत्र इसीलिए देता हूँ ताकि गलती ही ना हो। Okay, but yes, it's just like that. I can use the same fire to cook a food. I can put my hand on the fire and burn my hand. तो राइस पकाना उसके ऊपर रख के इट्स द राइट थिंग। हाथ रख देना गलत बात है। you did the mantra in the wrong way. Okay, so that's why it is said no कि जब मंत्र कोई देता है तो उनसे बड़े ध्यान से समझ के उसको लेके उपयोग करना चाहिए। क्योंकि so how to means can we avoid मतलब इससे बच सकते हैं, उपाय क्या है? Yeah, you can by rectifying the mantra whenever you are doing, when you are chanting, make sure you are chanting it right.
or else the second thing that you can do is don't chant outside. क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे उच्चारण में गलती होती है. मीन्स व्हेन आई एम सेइंग एक पर्टिकुलर शब्द बदल जाता है. माइट बी आई जस्ट कॉफ्ड एट दैट टाइम एंड द मंत्र बदल गया. आई माइट जस्ट हर्ड समथिंग एंड सडनली माय थॉट वेंट समवेयर एंड द मंत्र बदल गया. लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज देखी होगी, वॉट एवर यू आर सेइंग थ्रू योर माउथ, यू माइट स्लिप फ्रॉम योर माउथ, बट विद इन इट विल नेवर स्लिप. सो डू इट विद इन. इसीलिए कहते हैं ना मन त्रयते मंत्र, मतलब जो चीज आपको मन के परे लेके चले जाए वो मंत्र है. सो उस चीज को अगर आप अंदर लाइक विद इन योर सेल्फ यू आर चैंटिंग दैट मंत्र, देयर इज नो वे इट विल गो रॉन्ग. सो यू कैन डू दैट, दैट विल नलिफाई द थिंग्स. और कभी कभी अगर गलती हुआ भी है तो उसके निवारण भी किया जा सकता है. सो देयर आर पाथवेज टू डू दैट. उसी को क्या करते हैं, लाइक लेट्स से आई पेंटेड द वॉल ब्लैक, आई वांट इट व्हाइट, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पेंट इट अगेन. सो रीपेंट इट विद द राइट कलर दैट यू वांट. So similarly, when you start chanting the mantra in the right way, then you nullify that. You do a simple, very particular puja, आप क्षमा प्रार्थना करते हो. So when you do that also, then also it's, see, we are not dealing with demons, we are not dealing with नकारात्मक शक्तियों से deal नहीं करते. So we are dealing with the divine beings. So divine beings का एक बड़ा quality होता है, they are always benevolent. वो मान लेता है ठीक है गलती हो गई, अगर क्षमा पूछ रहा है तो छोड़ दो, जस्ट गिव इट. यू गॉट दैट. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने आंसर कर दिया क्वेश्चन समझ के. ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, करेक्ट. ओके, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज देयर. या ओके, सो एनीथिंग एल्स? नाइस Manoj. That's it Manoj. Thank you so much for the simplicity. Simple stories with strong concepts. Yeah, we will keep on doing that. Thank you. Okay, chaliye. Dhaval ji is back. So Dhaval ji, बस तो due to some internet glitch, got it. now I'm back home. So I was saying that that is happening and it is very live. Couple of hours back story, so and it was so correlated with what you said. We can simply say one thing, Dhaval ji. All that we have spoken for the past years, you will go through all that. You will experience what have been said. That's it. So that's what is we're going through. Enjoy. ये तो अच्छा है ना, पहले से ही बता दिया जाता है कि क्या होने वाला है. So do you have any questions? Thank you for all that. Thank you. We are so happy now. कुछ लोग ना आपको देख के बोलेंगे इनको क्या हो गया भाई, इतना जल्दी कैसे बदल गया ये इंसान. What has changed in him? Like there are many people, those who sit and think, like, will just looking at you and they just think like, what transformation happened into this being? So sheer grace. It's your sheer XP, like your preparation. That's it. So thank you, Dhaval ji. So I'll just rush around because समय बहुत कम हुआ है अभी. It's already 10:30, so I'll rush away. Okay. Thank you, Dhaval ji. So we'll be listening to your stories again. So thank you for sharing. प्रणाम. ये चिदविलास किधर गया? 4 बार हाथ उठा के. अच्छा, they are in the train, I believe. Okay. इसका इंटरनेट गया होगा. बिंदु जी कहाँ गए? अरे सॉरी, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड अगेन? I mistakenly. अच्छा, तब तक चिदविलास. बिंदु जी प्लीज रेज योर हैंड अगेन. I mistakenly made it down, so हाँ. So Bindu ji, just 1 minute, I'm taking another question. Huh? So Chidvilas, are you able to? Acha, so you are getting down. Okay, no problem. So park your question. We'll take it next time.
Okay. Yeah, Binduji, now you can unmute. Namaskar, sir. Namaskar, after a long time. Yes, sir. After a long time. But I'm always connected, sir. I always see all the videos in the YouTube, if not live. But yes, I'm always connected. Yeah. I just wanted to thank you for everything, sir. Mostly, I mean, whatever you have done, there are a lot of changes in my life after connecting. So I just wanted to thank you. But I have one question also, sir, today. Please go ahead. Sir, how does Mahamrutyunjay mantra work? I Okay. mean, can we chant it every day, or see if someone is sick, or can we chant behalf of them, Okay. for them, or getting sick? And if not for the sick, can we just do it like that, just to um, get As a some? precautionary measure kind of thing, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first and foremost thing, now coming to Mahamrityunjay Jap, it used to be, I'm saying like it used to be a very secretive mantra. Just like Gayatri mantra, it used to be a very secretive mantra. But coming back to the powers of that these mantras carry, especially you see like Om Namah Shivaya mantra or this Gayatri mantra, or people have started chanting it on a regular basis, but it was made public. Yes. The reason why it was made public, because they thought like these are the mantras that can actually help these people of this yuga to come out of those places. नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र इतने आसानी से नहीं मिलता था. So anyways, now it is available to us. So the question here is, can we chant it daily? Yes, you can chant it daily. Second thing, can I chant it for somebody else? Absolutely, you can chant it for somebody else by taking their name and gotra. आप उनके नाम पे. If I take it, just like, can I pay the bill of a bank for somebody else? Yes, you can. All that you have to do is fill their details. Will that show effect to them properly? Absolutely, it will. Kyunki it just works in this way. It will actually work in both ways, because you are chanting, you will also get the benefit out of that. But at the same time, because you are saying it, like, जैसे हम, you might have done a havan at your home, right? जब आप आहुति देते हो, so what do you do exactly? You take ahuti and you take a name of a god and you put into that fire. The fire is the same, but you are taking the name of different gods and putting into that. The whatever you are putting that, it should go to that particular god, right? So उसी तरीके से जब आप किसी के लिए करते हो, देखो आप जैसे मंदिर जाते हो, तो मंदिर का पुजारी तो रोज पूजा करता है. He's doing the puja every single day. फिर उसको तो सारे फल तो उसको मिल जाने चाहिए. फिर आपको कैसे फल मिलता है उस पूजा का? Because whenever he starts doing a puja, he takes the name and gotra of yours. कि on behalf of him or her, I am doing the puja. इस पूजा का जितना भी श्रेय है वो उस तक पहुंच जाए. और आप ये कहोगे कि अच्छा फिर पुजारी को भी तो अच्छा मिलना चाहिए. बिल्कुल मिलेगा. क्यों? वो कहते हैं ना कि जो फूल बेचता है उसके हाथ में भी खुशबू रह जाती है. The one who is doing good about others, they will also get the benefit of it. So when you are trying to do something good for others, you will also get benefited out of that. Third thing that you asked, can it be done if somebody is ill? Absolutely, this is made for that. And there are other mantras also based on the kind of illness that they are going through. If it is a fatal disease, if it is something like that, for that Mahamrityunjay, because it is a mantra that itself speaks of beyond death, right? So ये मोक्ष प्रदायी मंत्र भी है और मृत्यु से रक्षा करने वाला मंत्र भी है. So that is another thing. Then coming back to, if nobody is ill, but can it done as a precautionary measure? There is nothing wrong in doing a good mantra in that. इससे क्या होता है? अगर आप precautionary measure से जैसा करते हो, तो अगर आप अकाल मृत्यु नहीं होती है आपकी. Is unwanted death जो होता है, unwarranted death जो होता है, वो नहीं होता है. So in that way this works. That's why this mantra is prescribed in this way. Actually, पहले तो बड़ा restrictions था इसके ऊपर, but now everybody started to chanting that, and I believe he has accepted it in that way. Or else अगर वो नहीं चाहता तो ये मंत्र बाहर नहीं आते थे. So that means yes, I believe like I gave answer to all the questions that you asked. Anything? Yes, sir. One more question, sir. Please. Sir, can we do Hanuman Chalisa as well when I'm doing Mrityunjay?
Nothing wrong in it. How does it matter? There is no problem with that. And then people come up with so many things. Now, I'll tell you one funny thing. They say you have to use one mala for one mantra. That means if you are doing 8 mantras, you have to wear 8 malas. ऐसा नहीं होता है. जप माला जो है, you can do the chanting of many deities on one mala. Similarly, at the same time, you can do the chanting of many deities. No problem with that. For example, if you see Durga Puja जब होता है, so in Durga Puja, if you go to the eastern side, especially Bengal और उड़ीसा अगर जाओगे तो दुर्गा पूजा में सिर्फ दुर्गा की पूजा नहीं होती, उसके साथ लक्ष्मी, गणेश, कार्तिकेय सब रहते हैं ना, सरस्वती. So ये सारे लोगों का मंत्र पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता. So similarly, it is just to give an idea that it is nothing wrong in doing 2 kinds of chanting until those 2 mantras are opposite to each other. Opposite to each other matlab one you are doing so that your energy goes up, the other you are doing to calm you down. So there is a contradiction in this. But in this mantra, in both the mantras that you are speaking of Hanuman Chalisa and Mahamrityunjay Jap, there is no problem with that. So you can do it. Okay. So I believe again, like the internet, my voice is clear to everyone. Okay, good. Chalo. So that means I believe like Binduji, your camera has gotten stuck. So in the meantime, I'll move on to Sudhaji, because I believe like I've answered the questions as well. Okay. So Sudhaji. So Binduji, I'll come back. Just a moment. Yeah, Sudhaji. गुरुदेव प्रणाम. कोई गुरु मंत्र कैसे सिद्ध होता है? गुरु मंत्र सिद्ध नहीं होता, जो गुरु होता है वो सिद्ध करके आपको मंत्र देता है. उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें बस माला करनी है केवल. It's a beautiful thing again. Like, गुरु जो मंत्र आपको देता है, वो मंत्र आपको इसलिए देता है कि उसने उस मंत्र को सिद्ध किया है और उसे पता है कि आपको वो मंत्र से सिद्धि प्राप्त हो सकती है. एक ही कार्य आपको करना है कि जाप करते चले जाना है. जैसे कभी कभी आप देखे होंगे गुरु मंत्र कोई संस्कृत मंत्र नहीं होते, सिर्फ नाम जाप होता है. कि उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है, उस सिद्धि के जरिए उनको नाम जाप से सिद्धि प्राप्त हुआ है. तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको ये मंत्र देता हूं क्योंकि इसके पीछे मेरी ऊर्जा काम करेगी, क्योंकि मैंने ये सिद्ध कर दिया. दैट इज हाउ दे गिव इट टू यू एंड ऑल द दैट यू पीपल हैव टू डू इज. देखिए, 2 ही रास्ते हैं ना, रियलाइजेशन और द प्रोसेस. तो जो गुरु मंत्र आपको दिया गया है, गुरु आपको बताते हैं कि कितना करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, वो सारे चीजें बता देते हैं आपको, या खाली बोल दिया ये मंत्र करो. अगर मान लो गुरु ये कह देता आप चाहो 1 माला कर लो, 3 माला कर लो, 5 कर लो, तो हमें क्या करना है? आपको वही करना है जो उन्होंने बताया है. और अगर समझ में नहीं आता दोबारा पूछ लें, है ना? बिल्कुल पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए. ठीक है. हाँ, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो हम शिव की पूजा करते हैं, शिव हमें पसंद है, शिव अच्छे लगते हैं, या कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा की पूजा करते हैं, हम किसी की भी करते हैं, XYZ की, और हमें गुरु मंत्र दूसरा मिला है, तो हमें मैक्सिमम माला किसकी करनी चाहिए? कायदे से तो गुरु मंत्र की करनी चाहिए मैक्सिमम माला. लेकिन अगर दूसरा मंत्र चलता रहता है, दूसरा मंत्र, तो हमारा क्या सिद्ध हो रहा है? गुरु मंत्र सिद्ध हो रहा है कि वो जो ऑटोमेटिकली चल रहा है वो सिद्ध हो रहा है? क्या हो रहा है कि दोनों क्लैश कर गए, कुछ सिद्ध नहीं हो रहा? द्वंद्व है ना, धर्म द्वंद्व है ना ये. अच्छा, उसका उत्तर दे देता हूँ. वो सारे अलग है क्या? नहीं, अलग तो नहीं है. लेकिन गुरुदेव ये क्लियर, सीता कहो या राम, या कृष्ण कहो या श्याम, मुझे एक ही चीज पता है कि मुझे जो भी मंत्र दिया गया है, कोई भी मंत्र आपको दिया गया, अगर गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र स्पेसिफिकली किस लिए दिया जाता है?
आपको जो जिस चीज की प्राप्ति होनी है उस चीज के लिए जाता है। कभी धन के लिए हो सकता है, कभी नाम ख्याति के लिए हो सकता है, या तो गुरु मंत्र का मेन रीजन होना चाहिए आपकी मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए। तो मुक्ति में आप जब आपको मुक्ति मिलेगी, ये नहीं दिखेगा कि एक भगवान खड़ा है, ओके मैंने शंकर की पूजा की तो मैं शंकर के धाम जाऊं। अगर आपने निराकार की पूजा की है तो आप निराकार में विलीन हो जाओगे। मंत्र कोई भी जाप करो, ध्यान सिर्फ एक ही का, इसका कोई आकार नहीं, निर्गुण निराकार। लेकिन ये स्टेज चेंज भी तो मुझे लगता है अपने आप हम नहीं कर सकते, वो भी तो शायद गुरु ही करवाएगा। साकार तो दिखता है हमें, हम निराकार तक पहुंचे कैसे? हाँ, तो उसका उत्तर ये सुन लीजिए। जब आपको गुरु ने एक मंत्र दिया, क्यों मंत्र दिया जाता है? ताकि एक तरीके की ऊर्जा बने और वो ऊर्जा आपको लेके आगे चले। दूसरा क्यों गुरु मंत्र दिया जाता है कि एक मंत्र देने के पीछे का कारण यह है कि आपकी साधना में जो बाधा आ सकती है उससे वो आपको उबार सके, या तो आपके पिछले कर्म है जिसके द्वारा ये मंत्र के द्वारा उसके ऊपर उठा जा सके। ये सारे चीजों को ध्यान में रख के एक मंत्र दिया जाता है। तो इसीलिए जो मंत्र जाप है, इट माइट बी द फ्यूल। जैसे रॉकेट तो उड़ता है लेकिन उसके लिए फ्यूल की जरूरत होती है, सो इट माइट जस्ट बी द फ्यूल। तो मंत्र जैसे कहा गया है वैसे करते जाओ। और वैसे भी जब हर क्षण हर पल उसी में ध्यान लगा रहे और उसे कह देना एक ही, अब तू कोई भी रूप में आ। जैसे जनेश जी बेचारे कितने दिनों से परेशान घूम रहे थे एक शब्द के लिए, वैसे ही कि मंत्र मेरे जो भी करूं, ये भी आप यही करते हो ना कि ये भी तेरा तुझको अर्पण, यही वाला मानते हो ना? हाँ जी। तो तेरा तुझको अर्पण है तो मेरा कार्य क्या रहा? मैं कोई भी मंत्र पढ़ूं, वो भी सही जगह पे पहुंचाना तेरा काम। There is no और आपने ये बताया था जब हम माला पे मंत्र करते हैं ना, तो हमारी वो माला सिद्ध होती है, उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। हाँ, मान लो हम रुद्र का मंत्र कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला पे कर रहे हैं, जो भी, अगर हम माला से मंत्र कर ही नहीं पाते हैं तो हमारा क्या सिद्ध हो रहा है? गुरुदेव, देखो उंगलियों से कर रहे हैं या मानसिक कर रहे हैं या उससे कर रहे हैं गिनती गिन के, उसमें क्या सिद्ध हो रहा है? देखो हमारे जो वेदों में बताई गई है एक चीज कि जब आप शारीरिक रूप से कमजोर हो तो क्या आप साधना नहीं करना चाहिए? मानसिक रूप से करनी चाहिए, उसमें बताया गया अच्छे से। तो जब मानसिक रूप से जाप करते हो तो वो माला को नहीं फेरते आप, तो फिर भी ऊर्जा तो बनेगी। देखिए माला का एक जगह पे महत्व क्या है कि जो जब काउंट लेके करते हैं कि मुझे 1.25 लाख जाप करना है कि 2.5 लाख जाप करना है, 40 लाख जाप करना है मुझे, उस समय में माला की जरूरत पड़ती है क्योंकि यू हैव ए काउंट ऑल्सो ऑफ इट। दूसरा बात, वही माला को आप लेके सिद्ध करते हो और उसी को गले में धारण करके चलते हो। अब जब मैं माला उठा नहीं पाता हूं तो मंत्र तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये मंत्र कहां पे जा रहा है? वेयर इज दिस एनर्जी गोइंग नाउ? इसीलिए क्या करना सुधा जी, अगर आपका कोई माला है जिसमें आपने माला फेरा है, ठीक है, और आप अभी माला फेर नहीं पा रहे हो, आपके हाथ में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है किसी भी कारण से, उस समय में क्या करना, अपना जाप माला पहन लेना, वेयर दैट। तो पहनने से भी द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। द ओनली थिंग इज यू आर नॉट कीपिंग ए काउंट। माला का सिर्फ एक ही काम नहीं है, माला के अनेक काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, जब माला धारण करके रखते हो, आप देखो अब कुछ भी कर लो, मेरे अंदर एक माला तो रहेगी कैसे भी। Why? बिकॉज जब भी आप जाप करते हो माला, इट जस्ट लाइक, कैसे समझे, हाँ, इट्स लाइक ए, आपने फोन का पावर बैंक देखा है ना? पावर बैंक का काम क्या है? आप उसको चार्ज कर दोगे तो सो यू कैन रिचार्ज योर फोन्स अगेन, कहीं पे भी गए। माला इज लाइक दैट। मैंने जो जाप किया है वो, उसके अंदर जो ऊर्जा बन रही है, दैट विल हेल्प मी वेयर एवर आई गो।
क्योंकि जब आप अपने घर में बैठ के जाप करते हो, ठीक है, आप एक घेरे में बैठे या एक मंदिर में बैठे, वो स्थान सात्विक स्थान है। लेकिन जब आप संसार में बाहर जाते हो, आपको पता नहीं आप कौन से स्थान में जा रहे हो, हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, तब माला आपके लिए घेरे का काम करता है, आपका सुरक्षा चक्र बनता है, बिकॉज इट्स तो स्टिल क्या एनर्जी। हाँ तो बोलिए। गुरुदेव, ये जाप की माला क्या हमेशा पहन के रखनी चाहिए? स्पेशली अगर आप बाहर जा रहे हो तो पहन लो, इज नो प्रॉब्लम, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, अच्छा। इट शुड नॉट बी शोन आउट। और अगर एक प्रॉब्लम और है, आप माला पहन भी नहीं सकते, तब क्या करना चाहिए? तब क्या करना, माला को कृष्ण जी के पैर में रखो, बोलो प्रभु संभाल। नहीं, अब आप बाहर जा रहे हो, आप माला पहन नहीं सकते, दिखनी भी नहीं चाहिए, आपने जैसे बताया, इस टाइम क्या करना चाहिए? तो बटुक भैरव को लेके जाओ। हमने क्या नहीं दिया ये बताओ तुम पहले। गुरुदेव, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अगर टाइम हो तो पूछूं, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार। बहुत छोटा सा ही है वैसे। पूछ लीजिए फिर। पूछ ले। एक बार बताइए, जैसे आपने बताया ये जो शरीर से डिटैचमेंट, ठीक है, जब आपको कोई प्रॉब्लम है कहीं, उतनी देर तो आप डिटैच हो जाते हैं, आप सोच लो भाई ठीक है शरीर में प्रॉब्लम है ये, उसके बाद फिर घूम के वहीं आ जाते हो जहाँ आपको प्रॉब्लम है, उससे बिल्कुल मुक्ति कैसे मिलेगी? इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आंसर मृत्यु है। नहीं, वो तो जिंदा में ही चाहिए, मृत्यु तो वो तो अलग बात हुई। तो जीते जी आप ये चाहते हो कि शरीर के जो दर्द है, ये है वो ना हो? नहीं, मैं ये चाहती हूँ उनसे वो होते रहे, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क ना पड़े उनसे, क्योंकि वो होने तो है ही, अपने कर्म तो काटने ही हैं, हर हालत में कटने ही हैं कैसे भी, तो हम उससे डिटैच कैसे हों शरीर से? जब कॉलेज जाता हूँ ना सुधा जी, बच्चों को यही सिखाता हूँ, लोगों को कहता हूँ जब डिप्रेस हो जाते हैं तो एक्सरसाइज करना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, जिम चले जाओ। तो ऐसे ही आप तो, लेकिन जिम नहीं जाओगे, दौड़ोगे नहीं, तो मैं आपको एक ही काम करूँगा, जब ऐसे विचलित होने लगे मन ना, तो ध्यान बढ़ा दो, नाम बढ़ा दो, जाप बढ़ा दो। में क्वेश्चन तो मेरा वही है ना, जब कहीं शरीर में ज्यादा तकलीफ होती है ना, तो वो बड़े प्यार से, अच्छा चलो इसके लिए भी एक बात बता ही देते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे घुटनों में दर्द है और इतना दर्द है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, स्टेट राइट, ठीक है। तो उस समय आपको क्या ध्यान में आता है? सिर्फ जब आपके पैर में दर्द है तो आप कुछ सोच नहीं पाते हो, आपका दर्द हो रहा है बस। नहीं, आप थोड़ी देर कुछ सोच भी लो तो फिर घूम के दिमाग वहीं आ जाएगा कि दर्द हो रहा है। वही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको दर्द हो रहा है, तो आपको वो समय में क्या विचार आ रहे हैं? वही विचार आ रहे हैं कि मेरे पैर में दर्द है और बड़े जोर से दर्द है? अच्छा, गुड, सो आई विल आंसर 2 people टुडे विद द सेम आंसर। दर्द से डिटैचमेंट सच में होना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, तभी तो पूछ रहे हैं, होना चाहते हैं सच में? नहीं, मैं भी फिर से पूछ लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को तो स्वर्ग जाना है लेकिन मरना नहीं चाहते वो लोग। तो अब इस समय में, अब देखो, सिंपल एक ही प्रोसेस है। जब दर्द बढ़ जाता है ना, उस दर्द को नाम बदल दो। ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज चेंज द नेम ऑफ दैट पेन। आप उसे दर्द कहते हो, मैं उसे शिव कहता हूं। करके देखो। You see, there is an impulse in the mind. The impulse says that when there is a pain, when you speak of pain, जब आप दर्द के बारे में सोचते हो, it keeps on creating that kind of impact in your brain, so that it keeps on sending signals, वहां दर्द है, दर्द है, दर्द है, और आप उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसे याद रहता है क्योंकि दर्द है। So what I do is, from now, I will not call it a pain here. I will just say Shiva is throbbing here today. Shiva is dancing here today. क्या जोर से नाच रहा है, इसीलिए इतना जोर से दर्द है, लेकिन दर्द किसी और के लिए होगा, हमारे लिए शिव नाच रहे। आपकी मर्जी ना। You just do this and you see the shift in the pain.
what will happen is the signal that your brain is getting is not of pain. It is getting the message that you are that the God that you believe in is there right now dancing. Might be he's curing it. Might be he's taking away your past karmas. Might be he is cleansing you. Might be whatever he's doing, he knows better than you. So it is no more a pain for me. That pain becomes my sadhana. आपने देखा नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कांटे के ऊपर सो जाते हैं, क्यों? उनको लगता है कि दर्द साधना है। तो जब आपको भगवान ने दर्द दिया है तो उसको साधना बना लो। अच्छा है, कम से कम कांटे पे सोना नहीं पड़ेगा आपको। आपने कहा तूने दिया है, तेरी मर्जी, लेट्स से, बट आई विल कॉल दिस एज योर डांस, एंड देन यू सी हाउ यू डांस विद इट। आपका दर्द नृत्य बन जाएगा। थैंक यू। ओके, समझ धन्यवाद। बिंदु जी, या, so I So believe that's so good, sir. Dard sadhana hai. see everything Wow. can be converted into that, right? That is so Why can't real. I be- That is so real. Oh जब God. लोग I वही just got चीज- goosebumps. Oh God. people are going through that pain, अष्टांग योग करते, पैर के ऊपर, सर के ऊपर पैर लगा के, हाथ उल्टा लटक के, so what are they doing? They are trying to create that pain so that they can connect with the divine. I say, if the divine has given you a pain, why don't you connect with it? Yes, sir. That's awesome. It's as simple as that. Yes. Then every breath of yours becomes your sadhana. Yes. Okay, so I believe like I have Yeah, answered your questions, or is there anything left out? Just one thing, sir. Hmm. When I was asking you, you told that family पूरा होता है वहाँ पे, पार्वती जी, and so जब हम लोग करते हैं जो महामृत्युंजय मैं बोल रही थी, तो सारे फैमिली को हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है? No, nothing as such, because it is an independent mantra. But हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, कभी भी शिव के मंदिर अगर जाते हो तो if you are traveling to शिव मंदिर, make sure उनके पार्श्व देवता रहते हैं, मतलब उनका जो फैमिली वो हमेशा उनके साथ ही रहता है, तो उनकी सेवा कर लेना while in the temple, that is perfectly fine. और वैसे भी कभी भी कोई मंत्र जाप करते हो तो पहले you know the sequence of it, right? From where do you start? You start with the name of the Guru and the Ganpati, and then you start slowly move with your Ishtadev, and then you move. Means sorry, third is the what you call as the Bhairav, then you go with the Ishtadev, and then you go with the mantra that you chant. And it does not matter, it should be elaborated one. You can just say Om Gang Ganpataya, no, you start with that. Yeah. As simple as that. So if you are doing all these things, what happens is these people become a witness, and these people become like, if you are faltering also, they will guide you. So these are the guiding force that we can have around us. So absolutely you can do that. But in itself, Mahamrityunjaya is an independent mantra. So Okay. it can be jabbed independently without doing any. Without doing anything, it can be done. Sir, one thing I would like to ask you, sir, to just put a recording of Mahamrityunjay month in a group, so that just to know how it is pronounced exactly. I'll get it. I'll Say get it that. right now. Absolutely, I'll get that done. Thank you so much, sir. Thank you. Thank Okay. you so much. Thank you, Binduji. Thank you so Thank much. Abhaji. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत टाइम नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा टाइम दूंगी। Okay. एक तो ये बता दीजिए कि जो पुरस्कार चल रहा था अभी तक, उसके बाद क्या हवन वगैरह भी करना है? कल पूरा हो रहा है जो, कर तो दीजिए। क्या करना है? हाँ, या फिर वो दशांश तो ज्यादा किया ही है मैंने। ओके। हाँ, तो क्या एक माला का से चल जाएगा क्या? अगर आपने पुरुष चरण में अभी तक क्या क्या कर लिया, आप बताइए मुझे एक बार। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ज्यादा किया है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, बस। ओके, ठीक है। तो अगर उस तरीके में भी आपने कोई काउंट लेके किया है या फिर ऐसे ही काउंट। ओके, तो कम से कम दशांश भाग तो करना चाहिए, लेकिन अगर आपने तो ज्यादा कर लिया गुरुजी, दशांश ज्यादा किया, उससे भी ज्यादा किया। अच्छा, तो एक काम करिए, अभी और एक माला ले लीजिए, वो माला लेके कर दीजिए एक माले से, नो प्रॉब्लम, विल टेक केयर ऑफ दैट। चलिए ठीक है। और गुरुजी एक चीज और बताइए जी। कि पुरस्कार वगैरह तो जो नियम से लिए जाते हैं और उनका तो वैसे किया जाता है, ये अगर हम कोई जाप वगैरह कर रहे हैं और गिनती नहीं है,
तो उसको नहीं एक काम करना। करना चाहिए। देखिए, कोई भी आप देखिए, जब पर्व काल आता है, पर्व काल इन द सेंस, जब भी आप किसी भी देवी या देवता का मंत्र जाप करते हो, उनका कभी ना कभी एक बर्थडे आएगा या तो उनकी कोई पूजा होती है विशेष उनकी, उस दिन आप क्या करना चाहिए कि उस दिन आप एक छोटा सा हवन उनके नाम पे कर लो वही मंत्र से, ताकि वो साल में कम से कम 1-2 बार उनके नाम का एक हवन हो जाए। उसी से हो जाएगा आपका पुरुषचरण, क्योंकि आप काउंट लेके नहीं कर रहे हो। क्योंकि कुछ मालाएं, मतलब कुछ जाप ऐसे हैं जो कि जीवन भर चलती हैं, उसके पुरुषचरण आप नहीं कर सकते, काउंट नहीं रहता हाँ, उसका। यही तो नहीं, तो फिर जब मुझे बस एक ही चीज आ रही थी, एक थॉट आ रहा था कि जब सब समर्पण कर दिया है, जब सब दे दिया है, तो काहे की गिनती, किस चीज के अच्छा, लिए, क्या कनेक्शन, किस चीज का। अरे सब बिल्कुल। दिया है, तू संभाल लेना, गिनती गिनती वो खुद ही कर लेगा, मैं क्यों करूं। बिल्कुल सही बात। लेकिन उसमें भी जब आप ये काउंट नहीं रखते हो तब भी देखिए, जैसे अगर आप पुरुष चरण के बाद अगर आप ये भी नहीं कर सकते, मतलब आहुति भी नहीं कर सके, वैसे चीजों में आपको क्या करना चाहिए, जैसे ऐसे पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा ना पर्व काल आता है, तो उस समय उस देवी देवता के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, कोई फल फूल चढ़ा दो, कुछ कपड़े चढ़ा दो, ये उनके नाम पे ये कुछ ये तो चलता रहता है, ये चलता तो ही रहता एक ईयरली जो चलते हैं, वक्त वक्त पर जो कुछ आता जाता है। मेरा तो केवल इतना सा पूछना था कि जब सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो गिनती वो खुद कर लेगा ना। मुझे क्या समर्पण करना, कितनी माला, कितना जाप, पुरस्चरण किया विधि विधान से, वो तो अलग चीज हो गई गुरुजी। जो कंटिन्यू चलता है, है। तो इवन अब जैसे नाम जाप है या कोई मंत्र जाप है जो चलता है, उसके लिए क्यों हम गिनती करें। जब सब मतलब उसको दिया है तो गिनती की क्या जरूरत है। बस, सो यहाँ पे एक ही चीज समझ में आनी चाहिए आपको। वो याद जी। है ना जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो अंधा आदमी हाथ में लेके चल रहा था, लेकिन जिस दिन आंख खुली उस दिन लाठी छूट गई। उसी तरीके से जिस दिन आंख खुल गई उस दिन ये सारे चीजें अपने आप छूट जाएंगे, कोई बंधन में नहीं रहोगे आप फिर। सो नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अभी जो उसके आपकी आज्ञा से किया था पुरस्चरण, उसका तो मैं कर लूंगी। कल बिल्कुल, समापन हो रहा है। बहुत और बढ़िया। उसके बाद जो मेरी रामचरितमानस का भी कल समापन हो रहा है, जो सावन के महीने में लिया था। तो बस उसमें भी 5-7-5 चौपाई जो होती है उसकी, उसका भी कर दूंगी, एक साथ कर दूंगी। बिल्कुल, चलो ढेर सारा आशीर्वाद, बाकी का हाँ ऐसे हो जाए सब है, सब वो आप कुछ। देख लीजिए, ठीक है गुरु जी। चल, बाकी का धन्यवाद। जो है आप देख लीजिए बस, ठीक है, थैंक यू। चलिए, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, प्रणाम गुरु। प्रणाम। बेचारा चिदविलास ट्रेन से उतर के भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पूछ ले, प्लीज अनम्यूट। हाँ, हाँ, नाउ यू कैन स्पीक। अनम्यूट। चिदविलास जल्दी पूछो, लोग सोने भी चले गए। आर यू देयर, प्लीज अनम्यूट। चलो, कोई नहीं, आई बिलीव लाइक उसको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। ओके, सो आई बिलीव लाइक the Q&A, the question and answers that were done today. हाँ बोलो, आ गए फिर। बताओ। Like we have just reached the station, so there are calls coming. Did you reach? And also, I got it, got it. Guruji, actually, one is experience and one I have question. So ask the question. Yes, Guruji. So actually, when I get to some temple, sometimes most of the time I try to feel the energy there. But like most of the times they are like same. But the thing is, sometimes it so happens that I close my eyes and when I try to feel, my body gets a little unbalanced. Okay. Why is that happening? Like, why am I getting like little uncontrolled of my body? Okay, that's again a very simple thing. See, if you go to a certain place and your body is reacting in a certain way, might be the energy level is more there than that you are exposed to regularly. So when there is a higher energy there, it starts shaking you. Just think of you traveled from Hyderabad and you landed up in Himalayas and there is snow. Your body starts shivering. Why?
because the kind of temperature that you are used to, it's not that there. It's very different there. वहाँ पे कुछ अलग है. So when you are reaching out to that place, what happens? This happens. Yes, Guruji. Okay. So that's where it happens. But don't worry. Anyways, slowly, when you start moving with me, you will come to realize all these games. You will be at a better place to judge the energy of that place, and even how to play with that. Yes, Guruji. So what else? So like actually what happened is after I've spent time with you, like whenever I go to place, like when I went to Kashi, like when we went to Kedarnath temple, we were having Abhishek there. So it is like quite different for what like I used to experience before. It was like totally different way. So like it's I feel that it's maybe like because of you. So like I wanna thank you for that. So that's okay. You see, like कुछ तो होना चाहिए ना. Yes, Guruji. Something should happen, right? So it's good. सच बताओ, तुम उसमें तो नहीं बैठे ना? Like I was like beside that, like I did not get went to Guru. No, that sound that is happening, ये continuously आपके साथ ही चल रहा है ना, तो मुझे लगा आप कहीं उसमें तो नहीं बैठे. It's like continuously happening in the sense. No, not that. Don't worry, Chidvilas. I'm talking about the ambulance going by your side. Okay. Oh, okay. No, Guruji, I'm just outside that. Okay. Yes, Guruji. So like my experience, Guruji, actually, there was like Radha Yatra going, like we were holding the palki. Mm-hmm. So I was going in front and I was holding the palki. I got a chance of that. So now, Chidvilas, just for a moment, are you really sharing your experience or you want to give people some heartburn? My experience, Guruji. Okay, go ahead. So what happened is in between when I was going around, like I was in second place. So the first person was like he was just controlling, and in between he lost little balance and he just tapped on my one toe. So when I saw, it was like I saw that the nail of that toe came out. So I thought, okay, fine, it's gonna be okay. So like I was telling to Shiva, it's up to you. You have to cure it. I don't know what you do. So after 2-3 rounds and all, when I saw it, it was just back normal. Like nothing was changed at all. I was like, okay, fine. It's like first time something happened so dramatic and all. So welcome to the world of drama. He has another name called as Vaidyanath, right? Yes, Guruji. So who can heal faster than him? Yes, Guruji. And especially when you are doing his work, he takes care. Yes, Guruji. सोचो हनुमान का ख्याल राम नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? Yes, Guruji. Yes. फिर जब आप उसका काम करते तो आपका ख्याल वो नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? Let Yes, him take care of it. Like that's what I say. It's the moment you give the entire control in his hands. Yes, Guruji. You create that space for miracles to appear. And then you are no more waiting for the miracle to happen. You experience the miracle that very moment. Yes, Guruji. So, good. We are happy that at this age you are going to Kedarnath, you are going to Kashi, you are going to all the places. ये पालकी पकड़ के तुम चलते हो, कुछ लोग यहाँ बैठ के मरे जा रहे हैं कि हम कब जाएंगे. Okay, but good. So
the blessings from the entire family here. We are so, Thank you, Guruji. it is really good to see some people like you at this age doing all this. So, Yes, Guruji. वैसे तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा हो गया है, समझ में आ रहा है ना? 7 साल में करना चाहिए था तुम. But anyways, so we are so happy for you people, and good that you people were able to be part of such grand events. So may their blessings always continue on you people. Okay? Thank you. Thank you, Soumya ji as well as Chidvilas. Thank you so much. So, thank you everyone for burning the late night oil. Some people went to sleep and got back again, switched on the lights while listening to me. "Hey, Bhagwan, ye abhi tak baithe, ye sone chale gaye," but it's okay. That shows your genuinity, because some people have switched off their camera, so I don't know, but I know what they're doing anyways. So good. So thank you for all your amazing questions. And yes, literally, if the people, those who have missed the first part of the session, go back and listen to it. I don't want you people to miss on that first part of it. Okay. So thank you. Till we meet again on Sunday. Aham Brahmasmi and Tattvamasi. And remember, the quality of Shiva, Swatantrata. And I really like, I'm not sure like if Haribhai is around or not. Haribhai, are you there? I'm there. So finally, thank you. So Haribhai, all yours. जैसे सुधा जी कहते हैं ना कि पूजा करने के बाद सब वहीं समर्पित कर दो. So all yours now. You take over.